Hello everyone. Welcome to Creative Edge. I, Sumit Joshi, welcome you all on the behalf of entire Creative Edge team for this latest video of ours for you people. Fine. So as you guys already know, Creative Edge is famous for bringing unique content for all design and architecture entrance prep students, aspirants, right? So India's finest design and architecture architecture and design entrance preparation platform. So here again, what we are bringing this week for you all NATA aspirants is एक स्पेसिफिक सीरीज जहां पर इन अपकमिंग 5 days एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स फिजिक्स के वो सारे क्वेश्चंस जो नाटा के फर्स्ट अटेम्प्ट पर आए थे उनका डिस्कशन। सर ऐसा क्या इंपॉर्टेंट करना है, पेपर ऑलरेडी हमें पता था, आंसर की हमारे पास है, सो वी कैन प्रिपेयर। द थिंग इज क्वेश्चन आपके पास है, आपको आंसर पता है, उससे रिलेवेंट कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस लेवल पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सारा डिस्कशन हो रहा होगा इन अपकमिंग 5 days। आज हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की, फॉलोड बाय नेक्स्ट 4 days। इससे बाद, इस सेशन के बाद नेक्स्ट 4 days में we will be bringing topics from mathematics, reasoning, quantitative aptitude, right? So ये सारी चीजें आ रही होंगी नेक्स्ट 4 videos में। So अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल के लिए नए हैं, आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यू आर मिसिंग अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर नाटा प्रिपरेशन, दैट इज you have not subscribed YouTube channel of Creative Edge. So subscribe our YouTube channel. Make sure आपको फोमो ना हो, fear of missing out ना हो, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट आप मिस ना कर जाए जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता था। सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल and be regular, be also press the notification bell because आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, सीरीज ऑफ वीडियोस आने वाला है फॉर नाटा सेकंड अटेम्प्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो फर्स्ट अटेम्प्ट के पेपर के बेसिस पर है, राइट? मैं रैंडमली नहीं ला रहा हूँ क्वेश्चंस, तो मैंने आपको बेसिस बता दिया। सो फॉर दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज our basis नाटा का फर्स्ट अटेम्प्ट। फाइन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आज हम बात कर रहे होंगे फिजिक्स को लेकर। फाइन, सो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ वेरी फर्स्ट दैट इज मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस। सो मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस क्या थे? सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वाज a girl starts her motion in a straight line at a velocity of 60 meters per second. Her velocity is changing at constant rate. If she stops after 60 seconds, what is her acceleration? तो इस क्वेश्चन के लिए आपको प्रिपेयर क्या करना चाहिए? इक्वेशंस ऑफ मोशन, राइट? तो आप कह सकते हैं सर मैं स्ट्रेट लाइन मोशन इन स्ट्रेट लाइन प्रिपेयर कर लूं तो काम हो जाता। हाँ जी, मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एक चैप्टर, उस चैप्टर से भी स्पेसिफिकली क्वेश्चन जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन पर पूछा गया, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, डिकोडिंग हम कर लेते हैं। टॉपिक वाइज अगर आप चले तो आपको मोशन पढ़ना है, राइट? सो मैं स्टार्ट करूंगा विथ द टॉपिक फर्स्ट। सो टॉपिक इज मोशन, सब टॉपिक motion in one dimension और motion in straight line. So मैं mention कर रहा हूँ motion in one dimension. And to be specific, motion in 1D में भी आप आगे आकर के equations of motion पर बात कर रहे हैं. So what are the equations of motion? So there are 3 famous equations of motion. V is equal to U plus AT, the first one. The second one is S is equal to ut plus half 8t square, and the third one is v square is equal to u square plus 2as, right?
सर जब ये बता दिया तो ये भी बता दो ना कि ये टर्म्स क्या है, राइट? व्हाट आर द नेम्स ऑफ द टर्म्स? हाँ जी, ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। हियर वी, यू, वी, टी, ए एंड एस, ये सारे टर्म्स को लेकर हम बात कर रहे हैं। यू इनिशियल वेलोसिटी है, वी फाइनल वेलोसिटी है, वी फाइनल वेलोसिटी है, टी टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ए एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और एस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सो इस क्वेश्चन में व्हाट आर द things or what are the points that are given out of these five parameters or these 5 points? What are the things that we already know? Starts in a straight line at a velocity of, so our initial velocity is given, right? Velocity is changing at a constant rate if she stops at 60 seconds. So t is 60, stops. That means final velocity v is 0 unit, definitely meter per second, right? Acceleration. So what we need to determine is this. What we have is this, and this. So this is a question of equation of motion, जहां पर आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की रिक्वायरमेंट। फाइन, सो चलिए अप्लाई करते हैं। तो A will be equal to V minus U upon T. So you have the value of V, you have the value of U, you have the value of T. This time was in seconds. So everything is on same units. Distance meters में, time seconds में. So let's substitute the values. 60, nope, not 60. It is 0 minus 60. Because initial final velocity is 0. So it is 0 minus 60 upon 60. That will be minus 60 upon 60. That is minus 1 meter per second square. So acceleration का value will be -1 meter per second square. Fine. मैंने ऑप्शंस नहीं लिए हैं, शायद इसके लिए एग्जाम में ऑप्शंस भी अवेलेबल थे। एक क्वेश्चन आगे भी आएगा जहां पर न्यूमेरिकल आंसर टाइप भी है। तो मैं अभी फोकस इस बात पर कर रहा हूं वेदर दिस क्वेश्चन वाज इन एमसीक्यू फॉर्मेट और एनएटी फॉर्मेट, इस पर नहीं है मेरा फोकस। माय फोकस इज ऑन whether you are able to relate with the topic or not. Fine. So हम ये सारी बातें आज कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि इससे आपको आइडिया हुआ आपको अपनी एग्जाम के लिए क्या प्रिपेयर करना है, कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, टॉपिक्स में भी कहां से कैसे क्वेश्चन आए, राइट? केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर मैं आज नहीं आया हूं। सो मैं स्पेसिफिकली फिजिक्स बेस्ड क्वेश्चंस पर बात कर रहा हूं, राइट? चलिए आगे बढ़ता है। Next question is, which of the men from X, Y, Z will fall faster to the ground when they are jumping from an airplane, ignoring the air resistance? ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट है, फ्री फॉल की बात हो रही है, हाइट का डिफरेंस मैटर नहीं करता है, तो ऑल ऑफ देम विल कम ऑन द सेम टाइम। सो फास्टर है क्या? नहीं है, सारे लोग एक ही स्पीड से फॉल कर रहे हैं, राइट? सारे लोग एक ही स्पीड से फॉल कर रहे हैं, फ्री फॉल है, राइट? बिकॉज ग्रेविटी पुल कर रहा है उन्हें डाउनवर्ड। सो हु इज फास्टर? नोबडी इज फास्टर। क्वेश्चन अगर ये होता कि कौन पहले अर्थ सरफेस पहुंचेगा तो बात अलग होती, बिकॉज लोग अलग अलग हाइट से जंप कर रहे हैं, राइट? सो कौन पहले पहुंचेगा इस क्वेश्चन पर भी बात कर लेते हैं। हु विल रीच ऑन द ग्राउंड एट द अर्लीएस्ट? डेफिनेटली जिसके ग्राउंड से डिस्टेंस सबसे कम होगी, बिकॉज फ्री फॉल जी का वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? हाँ सर, कुछ कुछ याद आ रहा है। हाँ जी, बस वही कुछ कुछ ही चाहिए।
अगर आपको ये नहीं भी याद होगा तो आई नो कि आपने इससे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए हैं। फाइन, ठीक है। सो ये आपके सामने है। अगर ये आपको पता था तो आंसर आ जाता। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में इस तरह से फिगर देकर के ग्राउंड सरफेस लेवल भी मेंशन किया था। लोग इसमें ऐसे ट्रैप हो जाते हैं कि कौन सबसे पहले पहुंचेगा। क्वेश्चन वाज नॉट एट ऑल हु विल रीच ऑन द ग्राउंड फर्स्ट। फॉल फास्टर, फास्टर तो फॉल करने का स्कोप ही नहीं है ना बॉस। सबका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, सबके लिए एक्सेलरेशन जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो सभी लोग सेम स्पीड से फॉल कर रहे हैं। फाइन, ठीक है, क्लियर। चल, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ऑन अ लेंस। Under what condition does a biconvex lens of glass having refractive index acts as a plane sheet when immersed in a liquid? So अगर एक बाय कॉन्वेक्स लेंस को आपने एक लिक्विड में इमर्स कर दिया तो वो प्लेन ग्लास स्लैब की तरह कब रिएक्ट करेगा, कब रिएक्ट करेगा, ये क्वेश्चन, राइट। सो क्वेश्चन कहाँ से है? क्वेश्चन क्लास 10 के लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन टॉपिक से लिया गया। अब बड़ा ही बेसिक सा सिंपल सा लॉजिक है इसका। ग्लास स्लैब यानी कि प्लेन ग्लास की तरह रिएक्ट करने के लिए लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम हो जाएंगे तो ये एज प्लेन ग्लास स्लैब रिएक्ट करेगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव नहीं करेगा। फाइन। So the answer should be when the refractive index of glass lens is larger than the refractive index of the liquid. Nope. When refractive index of liquid is equal to the refractive index of glass or lens is equal to the refractive index of liquid. Yes. When refractive index of lens is lesser than the refractive index of liquid, यहां पर लेंस का बिहेवियर अपोजिट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लार्जर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास तो ये कॉन्वेक्स लेंस बिहेव करेगा, और यहां पर ये कॉनकेव लेंस बिहेव करेगा। फाइन, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट एक इमेज दिया है और बात हो रही है एट विच स्पॉट इट विल टेक लॉन्गर टू कुक पोटैटोज बाय बॉइलिंग इन अ वेसल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहां पर कम होगा वहां ज्यादा टाइम लगेगा। सो एज यू मूव अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, एज द हाइट इंक्रीजेस, राइट, atmospheric pressure decreases. Hence, at point A, pressure will be maximum. कहां से लिया गया है? क्लास 9th का क्वेश्चन है। हाँ जी, क्वेश्चन आया है सर, जेई व्हेन विल जेई पेपर 2 सेशन 2 रिजल्ट्स विल बी कमिंग? आई डोंट हैव एनी अपडेट। लेट्स फोकस ऑन नाटा। नाटा का सेकंड अटेम्प्ट है भाई। पेपर का जो रिजल्ट आना है वो रिजल्ट वही आने वाला है। यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू इट, बट जिस पर आप अभी काम कर सकते हैं हम उस पर बात करते हैं। सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, दो यू आर हिडन बिहाइंड दिस नेम। आई ऑल्सो वांट टू नो व्हाट इज योर नेम। आपके लिए मेरा क्वेश्चन जरूरी है ना, सो दैट आई कैन एड्रेस यू विथ योर नेम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर अभी भी आपको स्टडी मटेरियल प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड है, एक ऐसा मटेरियल जो आप क्विकली आपको रिवाइज करने में हेल्प करे, एक ऐसा मटेरियल जो आपकी प्रिपरेशन लेवल को टेस्ट कर सके, so you can download that material by clicking on the link given in the description box. Fine, ठीक है। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, लाइक दिस वीडियो। आने वाले 4 दिनों में इसी सीरीज में
नाटा फर्स्ट अटेम्प्ट के पेपर के एनालिसिस टॉपिक वाइज हो रहे होंगे। आज हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, आने वाले टाइम में मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डिजाइन एप्टीट्यूड को लेकर भी बातें हो रही होगी। फाइन, क्लियर है? तो कुछ इंपॉर्टेंट आने वाला है, आपके प्रिपरेशन में हेल्प होने वाली है, दैट इज फॉर श्योर। ओके, लाइक दिस वीडियो बिकॉज अब आप और आपके जैसे और भी जो एस्पिरेंट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगा, राइट? ऑल्सो फॉलोअर्स ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिल जाएंगे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम के भी। सर वहाँ क्या इंपॉर्टेंट मिलेगा? देखिए, हम कुछ क्विजेस चला रहे होते हैं टेलीग्राम पर, अपडेट्स सारी आपको इंस्टाग्राम पर मिल रही होगी, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन पेजेस को फॉलो करते हैं, वहाँ आप कंटेंट एक्सेस करेंगे, you will get a lot of things relevant to your exam. So let's move to next question. अब हम बात कर रहे होंगे आफ्टरनून शिफ्ट के क्वेश्चंस को लेकर। यहां पर पहला क्वेश्चन था, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन इज measured in astronomical units, light year, parallelactic second, मोल। देखिए, ये क्वेश्चन क्लास 11th के यूनिट्स एंड मेजरमेंट से लिया गया, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। आंसर है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, राइट? ठीक है, और बहुत बेसिक लेवल पर क्लास 11th के टॉपिक को टच किया है, ज्यादा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। थॉरो प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है क्लास 9th क्लास 10th के चैप्टर्स की, राइट? क्लास 11th क्लास 12th सुपरफिशियली भी रीड कर लें तो भी काम हो जाएगा। दीक्षिता asking, may you kindly tell excluded syllabus for NATA this year? दीक्षिता, एज सच नाटा ने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया इस बार सिलेबस में। आपने अगर नाटा का ब्रोशर देखा है तो आप ये जज कर पा रही होंगे कि उन्होंने 7 टाइप्स ऑफ रीजनिंग में ब्रेक कर दिया है और चीजों को ओपन एंडेड रखा है। So they may ask things, they may not ask things, but detailed syllabus कहीं भी नहीं है ना? हर एक का अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। मैं उस पर, अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है कि अंडर दीज हेडिंग्स क्या क्या पॉसिबिलिटीज है नाटक के पूछने की, तो ये सारा ऑलरेडी वीडियो के फॉर्म में अवेलेबल है दीक्षिता। आई होप मैंने आपके क्वेश्चन को एड्रेस किया है। सो लेट्स कंटिन्यू। Next question on our screen is, a 2-watt carbon resistor is color coded with green, black, red, and brown respectively. The maximum current which can be passed through this resistor is। हाँ जी, सो ये एक्चुअली अगर आप कार्बन कलर कोडिंग देखेंगे तो वहां ये क्लास 10th में आपको मिल जाएगा, क्लास 10th एनसीईआरटी। मैं जब क्लास 9th क्लास 10th इस तरह से बात कर रहा हूं तो मैं स्पेसिफिकली एनसीईआरटी के चैप्टर्स के बेसिस पर बात कर रहा हूं, है ना? ऐसा ना हो कि आप किसी और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं जिसका मेरे को आइडिया नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है, एंड आई हैव मेंशनड इट, आप अपने उस स्टैंडर्ड का बुक स्कैन कर रहे हैं एंड यू आर नॉट गेटिंग इट एंड यू आर फेड अप। सो लेट मी स्पेसिफाई, मैं एनसीईआरटी के रेफरेंसेस फॉलो करते हुए आपको चैप्टर्स एंड क्लास का नेम बता रहा हूं, राइट? सो कार्बन कलर कोडिंग का एक स्टैंडर्ड BB रॉय GB VGW, लास्ट में इट इज W। सो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट एंड जॉन। इस तरह से एक इसका कलर कोडिंग था।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर स्ट्रिप्स में इसको डिवाइड किया गया था, राइट। सो फर्स्ट स्ट्रिप हम स्टार्ट करते हैं नंबर्स 0 से लेकर के 9 तक जाता है, राइट। 0 1 2 3 4 इस तरह से नंबर्स लेता है, और यहाँ 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2 इस तरह से ले रहे होते हैं। फोर्थ स्ट्रिप जो है वो कलर का जो बैंड है टॉलरेंस का वो बता रहा होता है, राइट। सो बैंड को लेकर बात करता है फोर्थ स्ट्रिप। तो कलर कोडेड विथ ग्रीन ब्लैक, ग्रीन 0 1 2 3 4 5, so green is for 5, black is for 0, red is 10 to the power 2, first 0 1 2, so into 10 to the power 2, right, and brown as such टॉलरेंस को लेकर बात करता है, बट हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू यहीं से आ चुका है। रफली हम एक वैल्यू डिटरमाइन कर लें तो आइडिया लग जाएगा कि क्या होने वाला है। सो ये आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई इन ओम्स। आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ओम्स फॉर्मूला पता होगा, V इज इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ, नॉट फॉर्मूला, ओम्स लॉ, दैट इज V इज प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल्स टू आई आर। बट सर यहाँ तो पावर दिया है, ये 2 वॉट तो पावर होता है, तो पावर इज V इंटू आई, राइट। और V का वैल्यू आई स्क्वायर आई आर अगर मैंने पुट किया तो पावर को हम रिलेट कर सकते हैं, पावर के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज आई स्क्वायर आर, पावर इज आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्मॉल या कैपिटल जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, राइट। सो कैपिटल आई भी अगर हमने यहाँ लिख दिया तो भी एक ही बात है। So let me go with the capital I only. So that आपको ये confusion ना हो। So P is equals to I square R, और I square is equals to P upon R, और I is equals to under root PR. I is equal to under root P upon R. Substitute कीजिए values. You will be able to decode the answer. So let's calculate it. P is 2, right? So under root 2. So under root 2 upon 5 into 10 to the power 2. So that will be value for I, not P, but for value of I. So that is 2 into 10 to the power minus 2 upon 5, or you can say 0, so 10 to the power minus 2 का रूट से बाहर अगर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, राइट। This will be under root 2 by 5 into 10 to the power minus 1. So 2 upon 5, 0.4. 10 to the power minus 1 under root 0.4, राइट। फर्दर वैल्यूज पर फोकस करें तो 0.4 से रिलेवेंट आपके पास एक ही ऑप्शन है, मिली एम्पियर, मिली एम्पियर, मिली एम्पियर कॉमन है, कोई और मैच करता लग नहीं रहा है, तो आंसर यही हो जाएगा। कैलकुलेशन एक्यूरेट नहीं भी करेंगे काम हो रहा है, राइट। ओके सुभिक्षा, I'll try to speak. All right, that's not 5. Thank you, thank you. That's not 5, that's 50. So 50, 2 upon 50 will be 0.04. Fine, that will be under root 0.04. Thank you, Anushka, for the correction. So, Subiksha, I'll try to speak in English. Fine. So let's continue with the next question. I hope आपको message, you guys have received a clear message that this was the topic. इस टॉपिक पर स्पेसिफिकली ओम्स लॉ को यूज करते हुए they've asked a numerical type question. Fine.
So color coding, though it may not be important from the point of view of your CBSE examination in class 10, but NATA has its weightage. Next one. An uncharged conductor A is brought near a positively charged conductor B. Then, एक uncharged conductor. There is an uncharged conductor and there is a charged conductor. Say this conductor is B. It is charged. It has certain charge on it. Say certain positive charge. So charge is always conserved, right? Charge is conserved. Charge का ये property होता है. This is one of the property of charge. So when I bring a non-charged conductor near to it, so the charge of this conductor will not change. Charge of this conductor will not change, but its potential will change. Its potential will change for sure. Of what will be happening to that potential, whether it will be increasing or decreasing, उसके बारे में बात करते हैं. So let's look at, so will charge change? The charge on B will increase? No. The charge on B will not change? Fine. Will decrease? No. The charge on B will not change. Fine. So out of 4 options, we have already eliminated 2. We have already eliminated 2. Now, if I bring this sphere A near this sphere B, so will this potential of B will be increasing or decreasing? ये कहता है option D says potential of B will increase. What is potential? Potential charge per unit of or per volume ऐसा कुछ है. चार्ज डेंसिटी से एसोसिएट करता है पोटेंशियल. फाइन. सो चार्ज पोटेंशियल पोटेंशियल कहां रिलेट करता है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. Will potential increase or will potential decrease? Potential will definitely decrease because you're bringing this uncharged conductor near it. So इस uncharged conductor में positive charge will be on this end, negative charge will be on this end, because this charge is positive. So positive negative will try to balance it out because negative opposite charges attract each other. So because of that property, these negative charges will attract towards this, and that will reduce the potential. Hence, answer will be B. Let's look at next one. Let's look at next one. A car traveling at a speed of 30 km per hour is brought to halt. That is, speed becomes 0. Fine. In 8 meters. By applying the brakes, if the same car is traveling at 60 km per hour, in how many meters will it be brought to halt with same braking? Right. And distance, you have to answer this question. This was a numerical answer type question. Right. And this distance must be answered in meters. Again, this is a question of equations of motions. Equations of motion. Right? And what are these 3 equations of motion? We already had discussed. First one is V is equal to U plus AT. Second one is S is equal to. Second one is S is equal to UT plus half AT square. And third one is V square is equal to U square plus 2AS. Right? Here, this is 30 km per hour. This must be converted into meters per second, and this 60 km per hour must also be converted into meters per second because we want to answer finally in meters. Right. So 30 into 5 by 18. So this is 5, this is 3. So that will be 25 by 3 meters per second is the initial velocity U. 25 by 3 meters per second. Final velocity V is 0 meters per second.
Distance S is 8 meters. So we know this S is there. We know this S. We know this A. We know this U. We know this V. So what we are expecting is to determine time. Do we know this A? No. So what we are expecting is, let's determine this A here. So let's substitute the values here and then we can determine this A. Why am I not putting this value here? Because I don't have this value of time, right? So value of A can be calculated from here. That is V square minus U square upon 2S. That will be giving you value of acceleration. That acceleration will be definitely in negative value. So that will be minus 25 square is 625, 3 square is 9, and 8, 2 into 8 is 16. So that will be minus 625 upon 144. This is the value of A. Now, I'll substitute the same value of A in this same equation. Here, this time value of U will be 60 into 5 by 18. That is 10 by 3. That is 50 by 3. V will be finally, V2 will be again 0. A2 will be same because at the same braking. With the same braking, so A2 will be equal to minus 625 by 144 meter per second square. And what we need to determine is distance S. So this S can be calculated. Fine. Now, I'm not solving it completely. I hope that you guys will do the needful calculation kar lenge na. I hope you guys will do the needful here from here. Let's move to next one. A body of mass 1 kg moving on a horizontal surface with an initial velocity comes to rest after 10 seconds. So U is 8 meters per second. V is 0 meters per second. Time is 10 seconds. Right. If one wants to keep the body moving on the same surface with the same velocity of 8 meters per second, what is the force required? Force is mass into acceleration. Mass is given 1 kg. Acceleration we can determine using this equation. V is equal to V square is rather first equation of motion. First equation of motion, that is V is equal to U plus AT. V is 0, U is 8, A we have to determine time is 10. So that will be 10, A is equal to minus 8 or A will be equal to minus 4 by 5 meter per second square. Now substitute that value of A here and you will have the value of force. Though the sign of minus will not be considered because we have to answer it in newtons. So this is the force required. Negative sign says the force must be applied in the opposite direction. That's it. That's it. This negative sign ka significance here is we need to apply the force in the opposite direction. That's it. Clear? So that must be 0.8 because here it is 1 into 4 upon 5. So that is 0.8 newtons. Okay. So from which chapter it was? Again, class 9th, forces is the chapter. Next one. The child here has to choose which of the 4 following horses if he has to experience faster revolution. So I hope you guys are able to see this picture clearly and you guys are able to decode. You guys are able to decode. This is circular movement, right? So circular movement, in circular movement, the maximum he has to experience faster revolution.
So faster revolution will be experienced more with the larger radius, right? Because circular acceleration is given by mv square upon r, right? mv square upon r. सर यहाँ तो रेडियस नेगेटिव जा रहा है, तो आप कैसे बोल रहे हो? हाँ जी, मैंने क्या कहा है? लेट्स अंडरस्टैंड इट. इफ ही हैज टू एक्सपीरियंस फास्टर रिवोल्यूशन, रोटेशन फास्टर होना चाहिए, फास्टर रोटेशन एक्सपीरियंस करना है. एक्सेलरेशन इज दिस. नाउ हाउ विल ही बी एक्सपीरियंसिंग इट फास्टर? सो उसके लिए बात करें, देखिए ए पर look at A, B, C and D. So D is relatively inner, A is also inside, B और अंदर है. जितना अंदर होगा उसका आउटर सरफेस, उसका रेडियस उतना ज्यादा कम हो जाएगा. जितना कम होगा एक्सेलरेशन उतना ज्यादा हाई होगा, राइट? बट दिस इज विथ लीनियर एक्सेलरेशन. हमें बात चाहिए एंगुलर एक्सेलरेशन. So angular acceleration v is equals to r omega. So omega is equals to v upon r, right? So v square is equals to r omega square. So if we substitute this value here, so that r will be numerator. That r will be numerator. तो हम यहाँ बात कर रहे हैं faster revolution की with reference to circular motion. So that circular motion will be m into r omega square upon r, that is m omega square r. So ये r जितना larger होगा उतना faster revolution experience कर रहा होगा वो person. Hence, this was from class 11th. So overall, if we talk, there were only two questions that were from class 11th and 12th. Majorly questions were from class 9th and 10th. So we expect आपको सबसे पहले you must prepare class 9th, class 10th thoroughly. Then only go for class 11th and class 12th. There also prepare the basics first. Then only आपके पास all time है तो physics को और explore कर सकते हैं. Otherwise, I'll suggest to prepare the other subjects as well, right? So I hope you guys had a good insight about the subject from the point of view of NATA examination. And please like this video, share it with your friends so that this can reach to maximum NATA aspirants and help them a lot. So thank you guys. Thank you so much. I'll be seeing you in our next video. Till then, take good care of yourself. Prepare well. Thank you. Bye-bye.